गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। Om Shanti 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 Hari Om. Let there be peace, let there be peace and love amongst all the human beings of this universe. Let there be peace, let there be peace. Om Shanti Shanti Shanti. We have started the contemplation on the chapter number 17, that is the manner of destruction of mind, where we have seen that the when we use the word the destruction of mind, that doesn't mean that we are really going to do something like knife चाकू लेके वो mind को खत्म करना, नहीं, nothing of that sort. Destruction of mind means very simple. It is the dissolution of all your thoughts which are popping up from the mind. Actually, mind is still is a consciousness, but because of the upadhis, because the mind is always outward, because the mind is always strained because of the different ideas, different reflection, different thought process, different imagination coming in the mind, and never it thinks about its divine nature. It never thinks about its consciousness nature, and that's why the mind becomes thick, and then that mind has to be destroyed by doing the contemplation or an inquiry on the truth. So basically, our purpose of contemplating or studying is only to know the truth. So likewise, we have started this chapter number 17, in which first we have seen the Bhasa Vilas Samvad, and this Vilas asks the question, how you are doing, how you are spending a time. Like we also ask the people, are your penance were fruitful? जो आपने तपस्या की वो fruitful थी, कुछ फायदा हुआ? Are you happy in your life? That's what Vilas asked, and the Bhasa tells him that happiness cannot come when you are all the time being in the worldly existence. जब आप पूरे हर वक्त के लिए worldly existence में रहोगे, तो happiness will not come. For that, what you have to do is, as long as the knowledge has not risen, so long where is happiness for us? जब तक ये knowledge नहीं मिलेगा, जब तक ये contemplate नहीं करेंगे, जब तक अपनी समझदारी जीवन में नहीं आएंगे, तब तक अपन कैसे कर सकते हैं? So thus making friendly inquiry after the welfare of one another to obtain liberation and get the clear knowledge in course of time. बातचीत करते करते उनको clear knowledge मिल गया कि what is the truth, and what is the truth? Truth is divinity within. The truth is unfragmented consciousness. The truth is the self. Truth is divinity. The truth is bliss. And how to know that? In this relative world, don't expect that everything will happen as per your wish. आपकी मर्जी से सब पूरी दुनिया चलेगी, ऐसा आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। इस दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं कि अपनी मर्जी से सब कुछ हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये तो जीवन है। सो इन दिस वर्ल्ड मोस्टली एवरीथिंग कम्स एज अ सरप्राइज। सभी चीजें सरप्राइज कर रही है। यू आर मेकिंग ऑल ऑफ एफर्ट्स, बट एवरीथिंग कम्स एज अ सरप्राइज। सो यू हैव टू बी हैप्पी इफ एवरीथिंग इज सरप्राइज. लेट अस नॉट इन्वॉल्व अननेसेसरी मेकिंग द मेस ऑफ माइंड. जगत में ज्यादा इन्वॉल्व मत होने तो मेस ऑफ द माइंड हो जाएंगे. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज let mind be at peace. हर परिस्थिति में let the mind be at peace, and we have to come out of this rubbish, come to discover your divine nature. ये जगत में जो कोई हुलाढाल इतना सब हो रहा है, कहीं कहीं कुछ कार्य हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब हम हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे नहीं. You have to lead a very dynamically patient life, patience life, but all the time you should remember your divine nature. We are doing it with a surrender to the God. भगवान रामकृष्ण परमहंस अगर आपके इष्ट देवत होंगे तो उनको शरणागत होके सब एक्टिविटीज करना. समझो मैं ऑफिस का कोई काम करता होगा तो बिफोर स्टार्टिंग द वर्क प्रे द लॉर्ड भगवान रामकृष्ण परमहंस. while doing the work pray Lord भगवान रामकृष्ण परमहंस. and after submitting the work pray Bhagwan Ramakrishna Paramahansa. If you do that,
your attachment to that work will not be there. So what will happen is asakti will not be there, kartutva abhiman will not be there, akartutva abhiman will not be there, and phalasakti will not be there. What we will be doing is we will take it as a hari krupa if everything goes as per our plan, and hari ichha if everything goes against our plan, and both the cases will be happy. So that's what Bhasa has told Vilas. So that was first story. Second is Sun Sakti, close attachment. That's what we are seeing, the types of attachment. There, then subsequent topic was Jivan Mukta Samachar, how the person who is liberated while living lives, so that he takes this world as a Rama Krishna or Rama Leela or Krishna Leela. So everything is happening because of the as a divine play. And in this divine play, play your role very effectively without spoiling the mind. अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से करो, पर अपना मन खराब नहीं होना चाहिए। ये हर वक्त याद रखना है कि हर परिस्थिति में अपना मन खराब नहीं होना चाहिए। समझो कोई बदमाश व्यक्ति आपसे डील कर रहा है, स्टिल मन खराब नहीं होगा। कैसे मन खराब नहीं होगा? There are four methods to interact this world. One is the person who is senior to you, reverence and respect. Another person who is of the same age to you, friendliness. The person who is younger to you, forgiveness. And person who is mischievous, indifferent. उससे दूर हो जाना, indifferent हो जाना. So that your mind, main thing is mind should not be spoiled under any condition, because you know mind itself is a consciousness. मन में जो विचार आते हैं वो विचार खत्म कर दिए तो कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस है ब्लिस है, ब्लिस है ना भगवान है। इतना सिंपल चीज है। तो बिटरनेस about anything, any bad feeling, any hatred towards anyone should not be there. किसी के साथ बुरा अपने को बिटरनेस और बुरा फीलिंग नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज अ सिंपल टेक्निक? लव एवरीबॉडी बट डोंट ट्रस्ट एवरीवन। सबसे प्रेम करो पर किसी पे ट्रस्ट मत करो। सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन दिस जीवन मुक्त समाचार। वी आल्सो सीन दैट अविनाशी इट इज गेन्ड वंस फॉर ऑल। अगर ये पता चल गया अपने को तो ये स्टेज अपनी एक बार आ गई। It is called as a Turyatita state. What are the four stages? Jagruti, like where we are now interacting through this YouTube platform, live platform, that is Jagruti. Second is Swapnavastha. When we go to the bed, we get dreams, that is Swapnavastha. Where is both the stages, Jagruti, Swapna also there, then we go to Shushupti. Long, long, deep sleep, Shushupti. There also we are there. Then Samadhi. We sit for a meditation and we get into oneness, that is Samadhi. But beyond this, there is a Turyatit state, like remaining either in a Jagruta Avastha, Swapna Avastha, Shushupti Avastha, or Samadhi Avastha, any one of them, and remaining in the tranquility. That's why it is said that the wise man sleeps during the daytime and wakes up during the night. What is the meaning of this? Wise man दिन में भी रहता है तो वो मिथ्या जगत को लेके रहता है. He is not taking it as a real, so he enjoys life. And night में भी और सब शांत रहता है तो वो डिविनिटी के साथ एक रहता है, बिकॉज इट इज ओनली नोस दिस इज द वननेस. सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज संसुप्ति स्थिति, sleeping state without sleep. You are in a sleeping state without sleep. That means you are awake to that divinity and not awake to the world. जगत में है बट जगत में नहीं है. So this is real spiritual practice. मौज में रहो, be happy. ऐसा भी happy रहे. If you are happy in spite of whatever is happening around you, then you are walking on a spiritual path. Don't become serious for spiritual practice. Never serious. Be relaxed. Real spiritual practice is be happy. You go to any organization, any place, anything, then what happens? Moment the divinity comes, samsara start coming in. So you have to see that your mind is been addressed properly. So that is what has been said in the Jivan Mukta Samachara. Then we started little bit on the Chitta Spanda Nirodh, that is the topic of today's our contemplation. The control of the moment of the mind, where we have seen the first shloka. Chidatmana ima itham prasarannihi shaktaya ityasya asyaryajaleshu nabhideti kutuhalam. So illuminator never gets illumined by what was, what get influence. He is never surprised. How can mind be disturbed today? Or how can mind be at peace today? वो बोलता है कि ठीक है जो है सो है, ठीक है, उसको क्या फर्क पड़ता है. माइंड इज लाइक obedient servant of ours.
if it is listening to the cause that it has to be always in a tranquil state, irrespective of whatever things are happening around. And if it is an agitating state, so that mind is our animosity. So it is said that these powers of the conscious self go from forth in this manner. Thus, regarding curiosity does not arise in him for this marvelous illusion. ये जो व्यक्ति वाइज हो चुका है, जो व्यक्ति अच्छे से जीना सीख लिया है, जो हर वक्त खुश रहना चाहता है और रहता भी है, उसके लिए कोई जगत कोई परेशानी नहीं कि उसको पता है क्या चल रहा है. मार्वलस इल्यूजन्स, बहुत सुंदर इल्यूजन्स, जैसा अपन देखते हैं मृगजल. मृगजल क्या है? मृगजल राजस्थान में जाएंगे, प्यास लगी है तो दूर पानी दिखता है, आदमी उसकी तरफ दौड़ना चालू करता है, पता चलता है वो भी दूर दूर जा रहा है, तब पता अरे इसी को तो मृगजल बोलते हैं, जो दिखता है पर होता नहीं. So अभी ये if he takes a glass in hand, empty glass, and goes and tries to pick up the mrugajal, he can never get that. Similarly in this world also, which is a marvelous illusion, ये जगत में एक से एक आश्चर्य इल्यूजन हो रहे हैं, तो उसको वो बड़े कूलली लेता है. And his mind doesn't go into the joyous state, his mind doesn't go into frustration stage, his mind remains one with the divinity in all the situation that is in a blissful state. Sometime mind will go down, sometime it will go up. So who cares? So that's what he'll say. Shloka number 42, page number 176, chapter number 17. Yatha jala parispandat vyatirikta ivambasa drishyate vartula avarte chitta spandat tatha jagat. So what is the meaning of this? Just as the circular whirlpool is seen as distinct from the water on account of the movement of water, so the world appears as separated from the mind by the movement of mind. जैसा जैसा मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, तो क्या हो जाता है, वो जैसा वर्लपूल पानी पे अलग से दिखता है, ऐसा रखा है, गोल 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 घूम रहा है, ऐसे लगता है. So that is a whirlpool, and that whirlpool, what we feel is, it is separate. We feel this whirlpool is separate from the water, but actually it is not. It is a part of water, because the moment of water, it is spinning around. अपने को भंवरा बोलते हैं, उसको भंवरा जैसे स्पिन हो रहा है, अपने को लगता है बाप रे ये तो कोई अलग चीज है, अंदर कोई मशीन लगाई होगी पानी के अंदर, अभी तो इतने जोर से घूम रहा है, और वो पानी का ही पार्ट रहता है जगत. वैसे ही माइंड के मोमेंट्स, अगर माइंड तुम्हें शांत कर दो, मौन व्रत ले लो, कुछ बोलो मत, और क्या हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, और कॉन्शियसनेस की तरफ जाना चालू कर देगा, और तुम्हारी थॉट्स प्रोसेस भी कम 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 होने लग जाएगी. सो दैट्स व्हाट इज बीन सेड हियर, द मोमेंट ऑफ माइंड हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड. So similarly, Jagat is nothing but the mind, throb of mind. And due to this whole world appears. पूरा जगत उसके थ्रॉब ऑफ माइंड्स. देखो पूरे संकल्पना करता है एक व्यक्ति, बैरन लैंड रहती है, बैरन लैंड है, वहां पे वो खड़ा रह के बोलता मेरा यहाँ घर रहेगा तो कितना अच्छा होगा. वो मेहनत करना चालू करता है, मेहनत करता है, इसके बाद पता चलता है कि ओके नाउ आई हैव मनी, नाउ यू हैव टू गेट अ मेसन, he has to get a contractor, he has to get a civil engineer, he has to get an architect, then he has to go to the market, get all the things. So his project will require 18 months to construct a independent house. He will make plan, he goes to the authorities. So all this is happening in the mind. Everything is planned. So moment of mind is increasing. उसके मन में पूरी संकल्पना तैयार होती है, उसको पेपर पे लाता है संकल्पना. So now he has now again made it very grossified. और फिर पेपर पे आने लाने के बाद he meets all the people. Again mind goes in thousands of thoughts. Then he makes budget. After that budget, he constructs a beautiful house. And that is the grossification of the moment of mind. उसके खुद के ही मन में आई थी भावना कि मैंने घर बांधना चाहिए. तो घर नहीं बांधना चाहिए कि, तो बांधना तो चाहिए, पर उसकी यूटिलिटी किसके लिए है देखना चाहिए कि is this house is helping us to know the truth that we are divine. So then perfectly okay. If you have constructed one house, happy with that. Don't start constructing another house, third house, fourth house, fifth house, and then you are caught into that. एक house बना लिया, दूसरा, तीन, चार, और वही business करने लग गए घर के, और फिर फंस गए उसमें. So house is there for what? To house this house. ये अपने बॉडी को हाउस करने के लिए, धूप छाओ बारिश से रुकाना, इसलिए हाउस है. मजे से रहो, बढ़िया बांधा है, अच्छे से पहले चीज बांध लिया, खुशी से रहो उसमें, हैप्पीली, नो राग द्वेष, बिकॉज सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, सेंस ऑफ ड्यूअलिटी इज जीरो. ड्यूअल कुछ है ही नहीं, सब अपन ही है. एंड सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस,
इनकम्प्लीट, भाई हमारे पास ये वस्तु नहीं तो हम इनकम्प्लीट, दैट इज जीरो. मोमेंट यू गेट बोथ द सेंस, अपना ड्यूअलिटी नहीं है, सब मेरा ही विस्तार है, ऐसा पता चल जाएगा. और दूसरा, मैं इनकम्प्लीट नहीं हूँ, मेरे को सब मिल गया है. तो एक स्वामी जी कहते थे, हमको माँ सब दिए छे, हमको कुछ नहीं चाहिए. हमको मदर हैज गिवन मी एवरीथिंग, नाउ आई डोंट वांट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. सो दैट वाज हिज भाव, एंड that was keeping him cool. And there is a very good story of mother of Bhagwan Ramachandra Paramahansa, when uh, Mathur Babu asked the mother, "What do you want? You please tell me. I am the king. I can get you anything. मैं तो राजा हूँ, मैं आपको जो मांगोगी वो दे सकता हूँ. आप बताइए माता माता जी क्या चाहिए?" बोलते सब कुछ है मेरे पास, तो ठाकुर जी के पास रहती रहती. तो बोले नहीं नहीं, कुछ जरूर सोच के बताइए क्या चाहिए. तो खूब सोचती और शाम को बताती, एक छोटी सी चूने की डब्बी ले आओ. तो सिर को हाथ मार लेते, राजा को क्या, ओल्ड लेडी चूने की डब्बी मांग रही. सो दैट इज व्हाट हर चित्त स्पंद इज वेरी रिड्यूस्ड. उसके डिजायर्स इतनी कम हो गई कि उसको सिर्फ पान में चूना लगाने की डब्बी नहीं थी उसके पास, वो मंगली ला के देना मेरे को पान में चूना. सो दिस इज अ चित्त स्पंद. सो दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय अस ओनली. जगत अपन ही निर्माण करते हैं और अपन ही उसमें फंसते जाते हैं. तो अपने को समझना चाहिए और उसमें से जितना हो सके अपन निकल सकते हैं. ये बताया अभी. नाउ द ब्यूटी स्टार्ट. श्री राम उवाच, श्लोक नंबर 43. येन प्रसपन्नन्दे चित्तं येन न स्पन्दते तथा तत्वा तत् ब्रह्मन् ब्रूहि मे यन् चिकित्सेय तदेव हि. We have come till this last time. Sri Ram has asked the question, we have come here. Revert sage, by which does the mind throb or move rapidly, or by which does it not move? Tell me that by which I may indeed cure that very moment. वो जो मोमेंट हो रही है, चिकित्से ना, वो मोमेंट को मैं शांत करने की कोशिश करूंगा. सो प्लीज टेल मी कि मैं किससे शांत कर सकता हूँ ये मोमेंट, और किससे ठीक हो जा सकती है. कि जो ये आपने बताया माइंड का थ्रॉप, तो मुझे पता चल गया ये माइंड मेंटल थ्रॉप होता है. आई अंडरस्टूड दैट, बट नाउ हाउ टू कंट्रोल दैट. सो वशिष्ठ ऋषि से, वशिष्ठ उवाच, श्लोक नंबर 44. गोकर्मे चित्तनाशाय योगे ज्ञानं च राघव योग तत्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यग् अवेक्षणम्. राघवा, देयर आर टू मेथड्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड. राघवा, दो प्रकार की मेथड्स है. एक तो योगा है, दूसरा ज्ञान है. योगा इज ए रिस्ट्रेंट ऑफ मोमेंट और द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द माइंड. योगा अपने को अप्लाई करना है, और ज्ञान इज परस्यूड और नोइंग द ट्रूथ राइटली और थरोली. मैंने दो मार्ग बताए वशिष्ठ ऋषि. दो मार्ग कौन से कौन से? एक तो योगा कर सकते हैं, चित्त वृत्ति निरोध योग करेंगे, यानी प्राणायाम करेंगे, ये सब करेंगे, तो बताएंगे आगे मेथड. और दूसरा ज्ञान, ज्ञान यानी कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, लाइक वी आर डूइंग. जीवन में समझदारी लाना है, निष्कलंक जीवन जीना है, चेयरफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी, पीसफुल, ट्रैंक्विल, कंटेंटेड हर वक्त रहना है, और चेयर और रिलैक्स एंड कूल रहना है. अगर ये सेकंड मेथड ये करना है तो. श्लोक नंबर 45. व्हाट इज श्लोक नंबर 45? प्राणादीन परिस्पन्नम चित्तम आहु मनीष्या तस्मिन् संरोधिते न्यूनम उपशांतम भवेत् मनः. Wise men call the mind as having the moment dependent on prana or vital air or bioenergy. When the prana is controlled, the mind certainly becomes tranquil. So if the prana is controlled by whatever the method, so let us try to understand that. Little bit like Anulom Vilom. So I'll do a little bit of Anulom Vilom. Take a deep breath initially and slowly leave it. And then we'll try to do Anulom Vilom. Normal Anulom Vilom. Take the breath from the left nostril, normal. Hold for a second. Leave it from the right nostril. Hold for a second. Take it from left, right nostril. Hold for a second. Leave it from the spine. So what are the air going in and air coming out? Air coming out should be twice the air going in. Likewise, you do 5 avartana, and what will happen is the mind will automatically quieten. This is called as yoga. Our vital energy, bioenergy will be, prana will be controlled. So these people, yogis who are tapasvi, they do it for hours together very happily, cheerfully, but this has to be done under the practice of the experts. We cannot do, because like I am saying and you started doing, no way. You should not do that, and even if you want to do it only for a minute or two, that's all. You should not do it more, because unless there is a proper guide who is very profound in that, then only you should do this pranayama. So another thing is, next shloka is 46. Manaspando
Pashantayam samsaram praviliyate suryo loka parispanda shanto vyavahiti yatha. By the cessation or quietening of the movement of mind, this course of worldly existence is completely dissolved, just as the worldly action cease on the cessation of the throbbing or movement of sunlight. जैसे ही रात हो जाती है तो पूरी एक्टिविटी शांत हो जाती है, डीप रात 12 बज गए सब शांत हो जाता है। वैसे ही जब माइंड शांत हो जाता है, मे बी बाय योगा और मे बी बाय ज्ञाना, so what will happen is, moment that is done, everything is shanta in this world. Your mind will go to the tranquil state. So now again, Sri Ram again asks, because he has a lot of problems like we have a problem. Sri Ram asks, Pranadina parispando vayu namrodate katam. How is the moment of vital energies or vital air like prana are controlled? How this has been controlled? Now one method is told by yoga. Now second method, Vasishtha says, Vasishtha Shastra Sanjana Samparka Vyava Vairagyabhyasa Yogata Ekatattva Ghana Abhyasat Pranaspando Nirudate. The movement of prana is controlled by the means of study or the practice of the teaching of scriptures, association with the virtuous people, absence of worldly desires, and practice of spiritual disciplines, and by the constant practice of one truth principle, uninterrupted. So we have to practice. So what are the things which has been told here? Shastra Sajjana Samparka. So we should be very much attached to the scriptures. We should be very much attached to the virtuous people. We should be absence of the worldly desires. We should practice spiritual practice and constantly after one truth principle. We have to do all these things. Ekatattva Ghanabhyasad, if you really want to control Pranaspanda Nirudate, if you really want to control, again we'll see Shastra, scriptures reading, Sajjana, association with virtuous people, absence of worldly desire, Vairagya, Ekatattva Ghanabhyasa, that means continuously after the practice of the truth, and practice of the spiritual discipline that has to be done. So that is being said. Next sloka 48-49. Avasanatmano jnanat asansprushti vikalpata purakadya nilayamat omkara cha uchcharaneva guru uktvana kramat vyapi pranaspando nirudate. By the absence of mental impression, by the meditation of the mind, by being untouched by the doubts, by the control of breath through inhalation, and likewise, or by the utterance of the sacred syllable Om, or else by other method described by the Guru, the moment of prana is controlled. Now, Vasishtha Rishi has told both the things in this shloka, number 48 and 49. What are those things told? He is told either you utter the sacred syllable Om, or do meditation of mind, control the breath through inhalation, that means yoga, anulom vilom, and any other method which the Guru has told to for the control of mind. So there will be a number of methods. So we have to see that. Shloka number 50. Abhyasene parispande prananam shayamagate mana prashammayati nirvanam avashishyate. When the moment of the vital air has come to its end by practice, so it is a practice which is required. इसलिए लोटा रोज घसना है. The mind attains to the calmness and nirvana for liberation from the matter and the mind, and the reunion with the supreme spirit is left behind. तो उसका क्या हो जाता है? माइंड ये मैटर से रीयूनियन करना बंद कर देता है. रीयूनियन मैटर के साथ बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? बचेगा तो सुप्रीम स्पिरिट है. दैट मीन्स मोमेंट योर माइंड इज बीन कंट्रोल्ड, योर थ्रॉब ऑफ द माइंड इज कंट्रोल. जब आपका मन शांत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली उस सुप्रीम स्पिरिट में चले जाएगा. सुप्रीम स्पिरिट इज लेफ्ट बिहाइंड, वही बचे रहेगा, दूसरा कुछ नहीं बचे रहेगा. So that is what been told here. And so what is this? If you are disturbed, sit quiet, take a glass of water, do anulom vilom. This is the practice which is told. When individual minds create individuality, the sansar begins. When individual mind understand that it is basically an abhivakti, that is a manifestation, and not individual, then you are progressing in the right direction. वो अभिव्यक्ति ईश्वर की. Although we are living in the relative world, yet worries of the world will not disturb us. Relative जगत में रह रहे पर जगत की worries अपने को disturb नहीं करेगा. So samsar means moment. For the destruction of mind, it does not mean something that we are destroying. The destruction of mind means like ice is merging in water, that is going to its normal state. So similarly, the mind is going to its normal state, that is the consciousness.
चित्त इज एसेंशियली कॉन्शियसनेस. अपना जो माइंड है एसेंशियली कॉन्शियसनेस है. व्हेन ऑब्जेक्टिविटी इज निगेटेड फ्रॉम दिस, ऑब्जेक्टिविटी निकाल दी तो कॉन्शियसनेस है. ऑब्जेक्टिविटी इज इमेजिनरी थिंग, इट इज नॉट रियल, और रियल नहीं है. therefore चित्त नाशाय मीन्स रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी component of the knowledge. Objective component निकालना है. Knowledge with objectivity is predominant factor in the mind. Knowledge of objectivity से तो वही mind है. So study of scriptures must form an integral part of our life. इसीलिए ये contemplation या afternoon meeting या ये जो है ये करना चाहिए. How it has to be done? No gossip. The purpose is what? Purpose is that always remember the spiritual examination is going on. In this world, always spiritual examination is going to be quiet. Nothing more to interact, nothing more to do anything of that sort. Be happy always. So, Raga, Dvesha, Lobha, Moha, Mada, Matsar has to be dropped. How it has to be dropped? If situation demands that, you have to keep quiet. Keep quiet. If situation demands that, you have to follow the path of least resistance. If there is some resistance somewhere, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, शांत रहो उस वक्त के लिए. वो समय जाने दो, everything will happen properly. माँ शारदा कहती थी कि अगर पानी पूल पे है, थोड़ी देर रुक जाओ, कीप क्वाइट, थोड़ी देर से पानी शांत हो जाएगा. व्हेन एवरीथिंग इज नाइस, देन अगेन स्टार्ट वॉकिंग. So you have to wait. How much time you have to wait? Maybe a day, maybe two, maybe 7 days, maybe more than that. Keep patience. वही माँ शारदा कहती थी. The study of scriptures must form the integral part of our life. यह स्टडी अपना इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए. इसने 4 गेटवेज बताए: कंटेनमेंट, ट्रैंक्विलिटी, होली कंपनी एंड स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स. उसके बाद बताते हैं सज्जन इज दोज हु आर विद सत. Who are the people who are sajjan, who are with sat, who are with the truth? And Gita says, Bhagavad Gita says, Abhyasa and Vairagya. Abhyasa and Vairagya both are required. So you have to do that. And so that nothing of the relative world influence us, although we are living in the world. So you have to do Abhyas. That means you have to practice it every day and know that for certain that this is world is illusionary. So it is a chidakash. Spiritual life is not a part-time profession. It is a full-time preoccupation. ऐसा नहीं कि आधा घंटा पूजा कर ली और बाकी देर फ्रस्ट्रेट होते रहे. 24/7 365 डेज अपन खुश रहना है हर परिस्थिति में. डोंट एंटरटेन एनी इमेजिनेशंस एट एनी स्टेज. कोई भी सोच अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं लाना है. एनीथिंग विच कम्स एंड गोज इज अ ट्रिक ऑफ माइंड. कोई चीज दिखती है, भगवान के दर्शन हो गए तो अपने ट्रिक ऑफ माइंड है. When we do not allow any experience to be born, then the throb of the consciousness in form of the division is stopped. तो जो थ्रॉब रहता है कॉन्शियसनेस का और स्टॉप हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज माइंड. वी हैव टू रिमेन एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ माइंड. बहुत ही सतर्क रहना है अपने मन की क्वालिटी के लिए. बहुत सतर्क रहना. व्हेन आई से आई सेपरेट फ्रॉम द माइंड. आई बिकम हैप्पी, आई बिकम मिजरेबल. सो दिस आई शुड बी available to us from maintaining the quality of mind. Quality of mind अच्छा रहेगा तो ये I अपना अच्छा रहेगा. So just keep your watch on the quality of mind under all condition. तुम्हारा ख्याल quality of mind की तरफ हर वक्त रखना है, हर कंडीशन में, तभी माइंड अच्छा रह सकेगा. And asambrushtam vikalapta, not getting disturbed by any kind of thought that comes in mind. Same time, thoughts will vibrate and they may confuse. Never mind. Don't fight with the mind. कभी कभी तुम्हारा confusion आएगा mind में. Don't fight. Let it be there. Change your activity. You go for a walk. Start washing the clothes. Listen to the music. Don't get agitated. Don't be disturbed. And don't come under the influence of the agitation of mind. अपने दिमाग के agitation में मत आइए. Mind comes under the influence of agitation. So although your studies are done, concentration is done, tranquility you are trying, contemplation you are trying, knowledge is concerned, there is no doubt. But when it comes to who am I, this mind start troubling you. Then we have a problem of unwanted habitual thinking. कुछ भी अपन सोचते रहते, मनोराज्यम. So no need to think about anything. कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं. तो अगर ऐसा हो गया तो ओमकार बोलने लग जाना. So let us do 3 times ओमकार and stop it here.
So this is one of the methods where the moment of prana is controlled. So now Rama again asks subsequently a last question in the shloka number 51. Sri Ram Uvacha Evam Chitta Shamam Proktam Samajnanam Katham Prabhu. Lord, the tranquility mind has thus been told by you. How is right knowledge obtained? आपने को knowledge कैसा अच्छा मिलेगा? That we will see that in shloka number 51 maybe tomorrow with these prayers. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om Tat Sri Ramachandra Arpanamastu. Submitting the divine fruits to the holy fruits of Sri Ramachandra.